Hi everybody, welcome to the Scratch batch. Today we're starting with ratios, proportions and variations. Welcome everyone. This is the first lecture on ratio, proportions and variations. Pranav, we've come down to Russian now, have we? Is that Russian? I suppose that's the Russian. That's all I could get from Bond movies and other movies where they show Russians as the bad guys always. Alright, probably with bad accent and a bottle of vodka all the time. Anyway, let's start with ratio and proportion. This is the first lecture from the Scratch batch. My name is Amit Surana. I am an engineer. I'm an aeronautical engineer. I am from Chennai. I have more than 7 years of experience teaching, and I have taught more than 3 lakh students. This is my Telegram group. If you haven't already enrolled or joined this group, please go ahead and do that. The link for this group is also given in the description. Use it. You'll be given upcoming sessions and notes. All the notifications will be available there. Let's start. It's Greek, right? Pranav, I didn't know we were doing obsolete languages also. Otherwise, I would have learnt Dothraki. Hi Anshdeep, hello buddy. Yes Pranav, yes. So let's start with understanding of ratios. Okay, let's begin with this. Now we've seen ratios in different places, right? We've seen ratios when you have to change the aspect ratio of your screen, correct? From 16:1 to whatever is the aspect ratio, correct? 3:4 or whatever, yeah. So if you look at A4 sheet, you guys know this A4 sheet, right? So A4 sheet also works in that way only. A4 sheet works in that way only. One part is to 4 parts. Yes, so your A4 sheet is basically like this. Agar ye one part hai, let's say if this is I don't know 1 centimeters, then this will be 4 centimeters. So it works in that. So a lot of things work in ratios. Yes, ratios ka use jo hai is spread across, not just with math, not just with science, but with anything. Yeah, literally anything. Even if you look at golden ratio, there's something called golden ratio. I'll probably do a separate video on golden ratio. Yeah, a very interesting part, especially its importance in nature and all that. Okay, so we'll do a separate session and in an informative session on that. Hi Priya. Okay, so first let's start understanding ratios. When I say that A for every B, yes, for every B, what does this mean? Example, for every 4 rupees, if I am spending 3 rupees, the ratio becomes what? 3 rupees for every 4 rupees, correct? So 3 rupees for every 4 rupees. This in other ways can also be told as 3 to 4. Okay, so if I say A is to B, this is the same as A over B. Yeah, we use the term is to, A is to B, when we have to talk about some other ratio. A is to B is the same as or is equal to C is to D. मतलब क्या है कि A और B का जो relation है, relation between A and B is the same as the relation between C and D, है ना? So A is to B is the same as C is to D, meaning what? कि A और B का जो multiplicative relation है is the same as C और D का multiplicative relation, है ना? Hi Dipendu, good evening. Clear? Yes.
Yeah, so that's basically ratios. ठीक है, अभी ratios. Okay, so if I say if ratio of length to width of a rectangle is say 1:3, then what is the length या what is the width of the rectangle? जल्दी से बोलो, quickly answer this. If ratio of length to width of a rectangle is 1:3, then what is the width of the rectangle? Rectangle का width क्या है? 3 क्या? 3 liters. 3 times the length, correct? So here if ratios are given, then you cannot find out the actual value. Yes, this does not mean कि length is to width is 1:3. It does not mean कि width is 3 centimeters, 3 millimeters, not necessarily. Yeah, what does it mean? If the length is 1, then the width is 3. If the length is 2, then the width is 6. If the length is 1.5, then the width is 4.5. Are you understanding this? Yeah, so ratios do not always represent the actual value. Sometimes they do, but not always. ठीक है, so you have to be very careful about this. Are you guys able to see this? ये दिख रहा है क्या आपको question? I know it's a little too light. I don't know why this happened, but पूरा font change हो गया. I hope you are able to read this. दिख रहा है? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया. दिख रहा है तो ठीक है, चलो ट्राई करिए वाला क्वेश्चन जल्दी से. Akshay, Pranav are saying A, Priya and Anshdeep are saying B. Okay. Anyone else? Aditya is saying B. People who said A, आपको कहीं जाना है क्या? Are you rushing to somewhere? Dipendu says A, Priya says B. Very good. Shivam, Shubh, B. जिन्होंने A बोला आपको किधर निकलने का है क्या? Any rush? Read the question carefully. 60 out of 180, एक क्लास में 180 स्टूडेंट्स है, उसमें से 60 अगर engineers है, तो what they are asking is what is the ratio of engineers to non-engineers. They are not asking the ratio of engineers to total students. No, engineers to what? Non-engineers. So how many are non-engineers here? 120. They're asking the ratio of this, which is what? 60 is to 120. How will you calculate this? Divide this with 60 1 times, divide this with 60 2 times. So this is the same as 1:2. Okay, A is your trap answer, and the trap was based on what? Human tendency of jumping to conclusions. Okay. ठीक है, जिन्होंने A बोला प्लीज चेक, अभी क्लिक हुआ, बढ़िया. जिन्होंने B बोला करेक्ट, सुपर. Now always remember ratio based questions में you will see this very commonly. अगर आपका आंसर 1:2 है तो there will be an answer called 2:1 also. जिनका 1:2 है आंसर, उसमें एक आंसर चॉइस ऐसा भी होगा 2:1. So this will also be used to lay a trap. ठीक है, इसमें ट्रैप क्या करेंगे ये लोग? क्वेश्चन उल्टा पूछ लेंगे. What is the ratio of non-engineers to engineers? Yes, तो non-engineers to engineers का रेशियो क्या हो जाएगा? 2:1. 120:60 which is 2:1. समझ में आया?
ये एक टाइप का ट्रैप ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चंस में आपको दिखेगा। A:B अगर आंसर है तो B:D रहेगा या B:A रहेगा, है ना। हाँ, DI में भी होता है, कई बार क्वांट में भी होता है। चलिए ट्राई करिए अगला क्वेश्चन, क्विकली ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन। Quickly try this, guys. Anshdeep says B 90. We are just starting. अपन सिर्फ ट्राई कर रहे हैं अभी. We are just starting. Don't worry. Akshay, Pranav and Shivam are also saying B. Very good. Aditya, Riva, very good. Super Ayush. तो ये क्या बोल रहे हैं? In a bag there are red and green balloons. The ratio is given as 3:4. Yes, they are saying if the bag contains 120 green balloons. Normally जब भी आपको actual value लेना होता है, ये ratio है, this is the ratio. Actual value can be taken as taking a common multiplier. ये जो x है, this x is called common multiplier, जो आप दोनों बोथ रेशियोज में सेम चीज मल्टीप्लाई करके यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मोस्ट कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस में ऐसे रहेगा कि अगर 4x नंबर ऑफ ग्रीन बलून्स, दैट इज 4x, अगर आपका 120 है तो x आपका कितना है 30। हमें क्या ढूंढना है 3x। सो व्हाट इज 3x? 3x is 3 into 30, 90. So the number of red balloons are 90, है ना। ये है x को रख के कॉमन मल्टीप्लायर। अदरवाइज व्हाट यू कैन डू, विल इरेज दिस ऑफ, इसे निकाल दो। व्हाट यू कैन डू हियर इज डायरेक्ट, यस सेम थिंग बट डायरेक्ट। क्या करोगे, 4 को क्या मल्टीप्लाई करने पे 120 आता है? व्हाट शुड यू मल्टीप्लाई टू 4 टू मेक इट 120? 30। तो सेम चीज आप यहां पे भी मल्टीप्लाई करोगे। 3 को 30 से मल्टीप्लाई किया, आंसर अपना 90। कूल, सुपर्ब, ब्यूटीफुल, वेरी गुड गाइस। नेक्स्ट एग्जांपल, ट्राई दिस गाइस। अगर क्लैरिटी के कारण आपको क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा है तो प्लीज चेंज द क्वालिटी, इंक्रीज इट टू 1080p। All right, answers have started coming in. Very good. Okay, we have a mix of answers. We have people saying B and D. Okay. शोभ नहीं, सॉरी, सारे D बोल रहे क्या? Everybody is saying D. वो पहले के क्वेश्चन का था। Okay, everybody is saying D. Very good. ये क्या बोल रहे हैं? राजू के पास 30 मार्बल्स है, ठीक है। राजू के पास कितने हैं? 30 मार्बल्स है। 18 उसमें से क्या है? रेड है। 18 आर रेड एंड 12 आर ब्लू, ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं कि श्याम के पास 20 मार्बल्स है। श्याम हैज व्हाट? 20 मार्बल्स इन रेड और ब्लू कलर्स, ठीक है। रेड भी है, ब्लू भी है। ये क्या बोल रहे हैं? इफ द रेशियो ऑफ रेड मार्बल्स टू ब्लू मार्बल्स इज द सेम फॉर राजू एंड श्याम, इनका जो रेशियो है रेड और ब्लू का राजू का, वही सेम श्याम का भी है। तो 18:12 का क्या रेशियो है गाइस?
18 by 12 is what? 3:2, correct? 18 by 12, 18 by 6 is 3, 12 by 6 is 2. 3:2 का रेशियो यहां पर भी है, मतलब यहां पे कैन वी से 3x and 2x, agreed? 3x and 2x, correct? So we have to find out उसके पास कितने ब्लू मार्बल्स है, श्याम के पास कितने ब्लू मार्बल्स है. What do we know? Total marbles, श्याम का total marbles which is 3x plus 2x is what? 20. तो अगर 5x is 20, then x is 4, 2x is how much? 8. Yes, so ये वैल्यू का इसका एक्चुअल वैल्यू है 8, इसका एक्चुअल वैल्यू है 12. Now what's the question? Raju has how many more blue marbles than Shyam? Raju के पास blue marbles 12, Shyam के पास blue marbles 8, so 12 minus 8, 4 marbles extra. Yes, beautiful guys, very good. तो here what did we see? यहाँ पे अपन ने क्या देखा कि अगर टोटल नंबर दिया हो, if the total number is given, then how to directly calculate this? इसको डायरेक्टली कैसे कैलकुलेट करेंगे कि ब्लू मार्बल्स, श्याम के केस में ब्लू मार्बल्स कितने हैं? 2 out of total 2 plus 3 5 parts. 2 out of total 5 parts of 20 marbles. समझ में आया? This will give you what? This is 4 times 4 into 2 8. Did you understand this 2 by 5 का लॉजिक? कि अगर टोटल मार्बल्स 3 plus 2 5 है तो उसमें से 2 मार्बल्स ब्लू है, ऐसा. क्लियर? चलो ट्राई दिस क्वेश्चन. न्यूमेरिक एंट्री क्वेश्चन है, टीटा क्वेश्चन है, आराम से पढ़ के समझना. This is 5:13:15. यार राजू खोपड़ी फोड़. 135 शिवम, आदित्य और प्रिया बोल रहे 135. अदर्स? वेरी गुड प्रणव. अंशदीप? हाँ शावेश, आज थोड़ा फॉन्ट जो है उन्होंने कुछ गड़बड़ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं. आई बीन इन्फॉर्म्ड, अगली बार से ये नहीं होगा, ठीक है? मैं चेंज करने की कोशिश कर रहा था बट एवरी स्लाइड में चेंज करना बिकेम अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर मी, तो फिर मैं छोड़ दिया. वेरी गुड प्रणव, अंशदीप, शुभ, वेरी गुड जयविन. चलिए, सो लेट्स क्विकली डू दिस. व्हाट आर दे सेइंग? $297 इन तीनों में ऐसे स्प्लिट करने का, राइट? सो वन वे टू डू इट वुड बी व्हाट? 5x, 13x, 15x. That means 5x plus 13x, that's 18x, plus 15x, that's 33x, is nothing but 297. So if 33x is 297, then how much is x? 9, correct? तो अगर x 9 है, ये पूछ रहे थर्ड वर्कर को कितना मिला. थर्ड वर्कर को कितना मिला? 15x. so 15x is 15 times 9. 150 minus 15 is 135. Got it? और इन अदर वे क्या हो रहा है कि आउट ऑफ टोटल 33 पार्ट्स, 5 plus 13 plus 15 parts belong to the third worker. This of the total 297 will give you what? 9 times 135. बढ़िया? क्लियर? आई होप यू अंडरस्टूड बोथ. ये बार बार x को लगा के आपके
घावों पे मैं नमक नहीं लगाना चाहता. Yes, so this is a little faster. Okay, try the next question. Here they've given things in terms of equations. Equations में दिया है हमें x, y और z का रेशियो ढूंढना है. 3 रेशियो वाला क्वेश्चन थीटा में नहीं आता है, बट क्योंकि मैं आंसर चॉइस अगर दे देता तो आप इजीली ढूंढ लेते, इसलिए मैंने ये किया. ट्राई करिए क्वेश्चन, क्विकली ट्राई दिस. इफ 2x is the same as 5y, which is the same as 4z, then what is the ratio of x to y to z? मोहम्मद केयरफुल नहीं, आई एम ट्राइंग टू बी अ लिटिल केयरफुल हियर. ये सारे बेसिक्स है, दीज आर जस्ट बेसिक्स. वी आर नॉट डूइंग एडवांस लेवल क्वेश्चंस, वी आर लर्निंग द कॉन्सेप्ट्स. ये सारे कॉन्सेप्ट्स के एग्जाम्पल है, ठीक है. 10:4:5. anyone else? So always remember when you end up getting such a question, जब अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, you can do it individually by ratios, but that's very time consuming, है ना. तो हमेशा ये ध्यान में रखो, equate this with LCM of the coefficients. coefficients क्या है यहाँ पे? 2, 5 and 4 का जो LCM है उससे equate कर दो, है ना. तो what is the LCM of 2, 5 and 4? 20. So if 20 is equal to 2x, which is equal to 5y, which is equal to 4z, now it becomes easy for you to find out the value. अगर 2x 20 है, then x क्या है? 10. अगर 5y 20 है, then y क्या है? 20/5 4. अगर 20 is 4z, then z क्या है? 5. Yes, so what becomes the ratio of x is to y is to z? 10 is to 4 is to 5. बढ़िया. ऐसे सिनेरियो में क्या करो, हमेशा whenever you have an equation, equate this with a constant value, and if you want integers, then the best thing to do is what? To go for ratios. Okay, go for the LCM, then find out the value. Clear? Another example, similar question, दूसरा example है, try करिए. You will get this not as a separate question, but ये किसी बड़े question का एक part होगा. This will be a part of a larger, bigger question, है ना. Quickly try this. Any answers here? 156, 84, 91. Very good, very good, very good. Superb. So what's going on here? मेरे को 7a, 13b and 12c को किसी कांस्टेंट से इक्वेट करना है. तो it will be what? LCM of 7, 13 and 12. अब मेरे को ये वैल्यू निकाल के कुछ मतलब तो है नहीं. 7, 13 and 12 बैठ के मैं मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालेगा, उससे मेरे को ये मतलब तो है नहीं. तो instead what I'll do is I'll directly take the multiple, the product of 7, 13 and 12. Yes, so if 7a is equal to 7 into 13 into 12, 7 7 cancel, a क्या है? 130 plus 26, 156. Yes, अगर 13b is equal to 7 into 13 into 12, then 13 13 cancel, b क्या है?
91, sorry, 84. 7 into 12, 84. And if 12c is equal to 7 into 13 into 12, 12 cancel, c का value क्या है? 70 plus 21, 91. So this way you get the direct ratio of A to B to C, which is what? 156 is to 84 is to 91. Cool है? Yes. कोई डाउट है अगर इसमें तो बता दो एक बार, if you have any doubts. नहीं, कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं. चलेंगे नेक्स्ट. Now the next thing we are doing is we are going to talk about operations on ratios. Yes, what do we mean by operation on ratios? कि अगर आप रेशियो पे कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है. ठीक है, give you a simple example. If ratio of length and width of rectangle is 3:4. ठीक है, रेशियो ऑफ लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 3:4. इफ लेंथ and width increases by 2 meters each, then what is the new ratio? Quickly tell me, what will be the answer to this? अगर मैं पूछूं कि अगर रेशियो ऑफ लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 3:4 एंड लेंथ एंड विड्थ इंक्रीजेस बाय 2 meters ईच, देन व्हाट इज द न्यू रेशियो? कैसे ढूंढोगे ये? इज इट पॉसिबल फॉर अस टू फाइंड दैट आउट? इज इट पॉसिबल फॉर अस टू फाइंड दिस आउट? नहीं ना, इसका वैल्यू नहीं निकल सकता है. वुड यू अग्री? वी कांट फाइंड इट आउट, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड. क्यों? क्योंकि अगर एक्चुअल लेंथ 3 meters है, एक्चुअल विड्थ 4 meters है, तो दोनों पे 2 meters ऐड होगा, तो अपना नया रेशियो क्या हो जाएगा? 5:6. अगर एक्चुअल लेंथ 6 है, एक्चुअल विड्थ 8 है, दोनों पे 2 ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा? दिस विल बिकम 8:10. आर यू एबल टू गेट दिस? वैल्यू कुड बी एनीथिंग ना. यस, अगर एक्चुअल वैल्यू 1.5 और 2 है तो क्या हो जाएगा? ये +2 3.5, ये +2 4, 3.5:4 हो जाएगा. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, है ना. So there is no direct way to find out the new ratio. Yes, so in that case try this question. ये फिर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताओ. Shivam, Shruti are saying D. Shubh says D. Shamili says D. Anshdeep says D. सब D बोल रहे हैं, है ना. Everybody is saying D. Okay, एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं. The ages of 2 friends are in the ratio 3:4. Let's say एक बंदा है 3, दूसरा बंदा है 4. ओके, 3:4. 5 years ago, 5 साल पहले उनका रेशियो क्या हो सकता है? 5 years ago what could be the ratio they are asking. Yes, so इसमें से मैं 5 years कम नहीं कर सकता, इधर से मैं 5 years कम नहीं कर सकता. That basically means these value have to be more than 5. तो या तो 6:8 होगा, दोनों में से 5 कम करूंगा, अलग रेशियो आएगा. सो टेक्निकली द आंसर शुड बी कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड, है ना. बट
यहां पे एक हल्का सा ट्विस्ट है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग, क्या वर्ड है ये? वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन इज वर्सेस कुड. इज वर्सेस कुड का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, आई एट चिली. आई एट वन फुल ग्रीन चिली. ठीक है, आई एट वन चिली. आई कुड ईट वन चिली. दोनों में क्या डिफरेंस है? इज मतलब क्या? डेफिनेट. यस, के आई एट अ चिली, श्याम इज ईटिंग अ चिली. मतलब क्या? श्याम अभी बैठ के मिर्ची चबा रहा है. ठीक है, उसके आंखों से आंसू आ रहा है, उसके पेट में से ड्रैगन का फायर आ रहा है, राइट? बट इट्स डेफिनेट दैट ही इज ईटिंग दैट चिली. बट व्हेन आई से दैट श्याम कुड ईट अ चिली, इज ही ईटिंग राइट नाउ? नहीं, बट इट इज पॉसिबल फॉर द पर्सन श्याम टू ईट अ चिली. Yes, so they are not asking which one of the following is a definite answer. They are asking which one of the following could be the ratio. Yes, so if you select cannot be determined or none of the above, if you select cannot be determined or none of the above, that basically means that all three are not possible. या तो तीनों पॉसिबल नहीं है, या तीनों में से कोई भी दो या तीन कुछ भी पॉसिबल है, मोर देन वन. समझ में आया? यस. सो लेट्स फिगर दिस आउट हियर. पहले अगर कोई भी रेशियो, देखो ये ध्यान से सुनना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इफ द रेशियो इज ग्रेटर देन वन, पहले रेशियो लेस देन वन देखते हैं. इफ एनी रेशियो, इफ एनी गिवन रेशियो इज लेस देन वन, तो आप अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर दोनों पार्ट्स में कुछ ऐड करोगे तो वो रेशियो का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा. लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल. ठीक है, लेट्स टेक द रेशियो 3:4. अपना रेशियो है 3:4, जो कि क्या है? 1 से छोटा है ना, 1 लेस देन 1. यहां पे अगर मैं इफ आई ऐड लेट्स से 1 ऑन बोथ साइड्स, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर मैं 1 ऐड करता हूं, 3 + 1 बाई 4 + 1, मेरा रेशियो क्या हो जाएगा? 4/5. यस, इवन इफ आई टेक 6 + 1 एंड 8 + 1, मेरा रेशियो क्या है? 7/9. ईदर विच वेज अगर आप कंपेयर करोगे, इफ यू कंपेयर दिस, लुक एट दिस, 3:4 से कंपेयर करो. 3/4 का क्या वैल्यू है? 3/4 इज 0.75 है ना. 4/5 का क्या है? 0.8. 7/9 का क्या है? 0.77. What are you noticing? क्या नोटिस कर रहे हो आप? कि वॉट एवर यू मल्टीप्लाई, जो भी आपका कॉमन टर्म आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 3:4 को, वेदर यू आर मल्टीप्लाइंग 1 3 × 1 4 × 1 या 2 3 × 2 4 × 2, आपका रेशियो बढ़ रहा है कि नहीं? योर रेशियो इंक्रीजेस. वुड यू अग्री? सो कैन आई पुट इट लाइक दिस? इफ आवर रेशियो A:B is less than 1, then जो भी x आप जो भी कॉमन मल्टीपल ले रहे हो, ax, जो भी ax प्लस एनी नंबर n डिवाइडेड बाय bx प्लस एनी नंबर n, इसका जो वैल्यू रहेगा विल बी डेफिनेटली ग्रेटर देन a/n. से yes if you understood this. दूसरा कोई भी आप एग्जांपल लगा के देखो. लेट्स से 3:4 को 30:40 आप लेते हो. यस, 30:40 अगर आप 31/41 करते हो तो इट्स स्टिल 0.756, मतलब 0.75 से ज्यादा है. या 35/45 करते हो, इट इज स्टिल सेम 7/9, 0.777 है ना. आ रहा है समझ में? सेम वे अगर आपका रेशियो 1 से कम है और आप कुछ सब्ट्रैक्ट करते हो, इफ यू सब्ट्रैक्ट समथिंग,
लेट्स से एक सेम 3:4, अगर मैं 3:4 में 1 कम कर रहा हूं, -1 क्या हो रहा है, दिस इज 2:3 विच इज 0.66। 6:8 में भी अगर मैं 1 कम कर रहा हूं, आई एम गेटिंग व्हाट, 5:7 विच इज हाउ मच, 5:7 क्या है, 71 पॉइंट समथिंग, 0.714 है ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो अपना वैल्यू क्या हो रहा है, इनिशियल वैल्यू, आर इनिशियल वैल्यू वाज 0.75, जो मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से सेम टर्म डिक्रीज कर रहा हूं, तो मेरा रेशियो 0.75 से कम हो रहा है, करेक्ट। ओके, क्लियर है। सो अगेन इसका क्या इन्फ्रेंस होगा कि अगर a/b इज लेस देन 1, देन ax माइनस एन डिवाइडेड बाई bx माइनस एन का रेशियो a/n से a/b, n क्या है, a/b, a/b से कम हो जाएगा। कूल। सब्ट्रैक्ट करोगे, ऐड करोगे, रेशियो इंक्रीज होगा, सब्ट्रैक्ट करोगे, रेशियो डिक्रीज होगा। वहीं पे अगर अपना रेशियो 1 से बड़ा है तो, इफ आर रेशियो इज मोर देन 1, लेट्स टेक 4/3। 4/3 क्या है, रेशियो इज ग्रेटर देन 1। इफ द रेशियो इज ग्रेटर देन 1, तब क्या हो जाएगा, लेट्स सब्ट्रैक्ट एंड सी, लेट्स ऐड एंड सी के 4 + 1 / 5 + 1 कितना है, इट इज 5/6। 4/3 कितना है, हाउ मच इज 4/3, 3, सॉरी 3 + 1, how much is 4/3? 4/3 is 1.33. It becomes 5/4 which is 1.25. देखो, अगर रेशियो आपका 1 से बड़ा है, कुछ ऐड करने पे वैल्यू कम हो रहा है, ऐड n to a ratio that is greater than 1, the ratio decreases. 1.33 से 1.25 हो गया। You can try this for the other value also. Let's say 8/6 का अगर आप ट्राई करोगे, 8 + 1, this will become 9/7, which is how much, what is 9/7, 1.28. it is decreasing, 1.33 से कम हो गया। क्लियर है? सो यहां पे कैन वी से कि if a/ax, अगर a/b is greater than 1, then ax + n डिवाइडेड बाई bx + n का जो रेशियो होगा वो कम होगा a/n से। सेम वे अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, ax - n / bx - n, वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा। सो द वैल्यू इंक्रीजेस व्हेन यू सब्ट्रैक्ट। यस, ये लॉजिक है। इससे आपको डेफिनेट आंसर तो नहीं आएगा, यू विल नॉट गेट डेफिनेट आंसर, बट देन दिस विल बी वेरी वेरी यूजफुल। ठीक है, तो दिस पार्ट वेरी यूजफुल इन एलिमिनेटिंग आंसर चॉइसेस। इसमें अगर कोई डाउट नहीं है तो शैल वी ट्राई आउट एन एग्जाम्पल क्वेश्चन। अब ये ट्राई करो। Now try this. Which one of the following could be the answer? Quickly try this. Hi Pankaj. हाँ पंकज, ये पहला लेक्चर है। This is the first lecture ratios का। I will be taking regular lectures on YouTube. Yes. आदित बड़ी प्लीज थोड़ा सा आगे करो, फॉरवर्ड करो प्लीज। You are watching the previous part.
लाइव में आओ। यू आई थिंक यू स्टार्टेड ऑफ लेट, तो आप पहले के पार्ट से रिप्लाई कर रहे हो, कंफ्यूज हो रहा है इधर। चलिए क्विकली क्विकली गाइस, अभी करके ट्राई करो। ये वाला क्वेश्चन हो रहा है क्या आपसे? So what is the saying? Ages of two friends are in the ratio 3:4 5 years ago. मतलब क्या, मैं 3x से 5 years कम कर रहा हूं, 4x से भी 5 years ही कम कर रहा हूं। Yes, what do I know? 3:4 is what? Less than 1. Less than 1 में अगर अपन कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेस देन 1 में अगर अपन कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं तो व्हाट हैपेंस? द रेशियो विल डिक्रीज, है ना? तो दिस शुड बी लेस देन 3/4। ये देखो, लेस देन 1 सब्ट्रैक्ट रेशियो डिक्रीसेस। तो क्या हो सकता है पॉसिबल आंसर? लेट्स सी। 3:4 कितना है? 3:4 is 0.75, 4:5 is 0.8। क्या 0.8 हो सकता है 0.75 से? नहीं, अपने को क्या करना है? रेशियो को डिक्रीज करना है। तो दिस कांट बी। व्हाट इज 5:6? हाउ मच इज 5:6? यार आदित्य क्या कर रहे हो? 5:6 क्या है? इससे भी बड़ा 0.83। नो, व्हाट इज 6/9? 6/9 is 2/3 which is 0.66. Can I say 0.66 is less than this? So 6:9 could be our answer. आ रहा है समझ में? 6:9 could be our answer. Is it clear? Very good Shyamli, very good Shubh, superb. So C, Pranav, not D. Again, C is a possible answer. I should get a value less than 0.75, which is C. This could be possible answer. They are only asking for the possible answer, which is 6:9. ठीक है? बढ़िया. Any questions, any doubts, guys? So please read the questions very carefully. ये छोटा सा जो वर्ड है, इसके बदले could, was के बदले could make a whole difference in the question and the answer. Yes? Try this question now. ये वाला question try करो जल्दी से. Quick. Okay, Shamli is saying D. Kumar is saying D. All right. Ganesh is saying B. Anshdeep is saying D. Okay. Anyone else? Okay, Pranav is saying both B and D. Chalo, let's try this. Okay. Profit earned by two partners are in the ratio 4:3. तो A और B का जो profit का ratio है
is 4:3. अब ये क्या बोल रहे हैं, ईच ऑफ देम अर्न 5 मिलियन, तो 5 मिलियन और एक्स्ट्रा इन्होंने अर्न किया, मतलब इसका भी 5 मिलियन ऐड हुआ, इसका भी 5 मिलियन ऐड हुआ, है ना. सो लुक एट द रेशियो हियर, क्या हो रहा है, 4:3 is what, greater than 1. So if you are adding something to it, अगर आप कुछ add कर रहे हो, then the ratio decreases, correct? Yes or no? देखो, a plus b is, a by b is greater than 1. अगर कुछ add करते हो तो ratio decrease होता है ना. तो हमें क्या ढूंढना है, we have to find out a ratio which is less than 4/3. What is 4/3? 1.33. So 1.33 से छोटा वैल्यू ढूंढना है. या आई थिंक मल्टीपल आंसर्स है इस क्वेश्चन के. यहाँ पे कछु गड़बड़ हो गया. Actually it was supposed to be each of them lost. If each of them lost, क्योंकि 5:4 is 1.2, this could be our answer, है ना. 5:4 क्या है, 1.25, this could be our answer. 6:5 is what, 1.2, this could be our answer. 9:6 is 1.5, this cannot be our answer. 4:3 is 1.75, सॉरी 1.33, ये नहीं हो सकता आंसर. इट शुड बी लॉस्ट, ओके, तभी ये आंसर कर पाएंगे. ओके गाइस, क्वेश्चन में थोड़ा सा गॉन्टगोल हो गया. इट शुड बी लॉस्ट इफ ईच ऑफ देम लॉस्ट 5 मिलियन. Okay, so we are not adding anymore, we are subtracting. तो subtract करने पे ratio increases. Yes, so my answer should be more than 4/3. Only answer more than 4/3 is C. Okay. A and B could be the answer अगर earned होता but lost है. Okay. आदित्य क्या बोल रहे हो, 3/4 लो फिर C आएगा. भाई 3/4 का 9:6 नहीं, फिर आप 6:9 देखोगे, एक ही बात है. उल्टा ये पापड़ थोड़ी ना कि ऐसे नहीं खा पा रहे तो ऐसे सेक लो. अगर आप 3:4 ले रहे हो, इफ यू आर टेकिंग 3:4, देन ये रेशियोज भी बदल जाएंगे. ये 4:5 हो जाएगा, 5:6 हो जाएगा, 6:9 हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा. ठीक है, चलो आ गया समझ में. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंपैरिजन ऑफ रेशियोज. कंपैरिजन ऑफ रेशियोज, हाँ ठीक है आदित्य, सुपर, वेरी गुड. चलो, कंपैरिजन ऑफ रेशियोज का क्या सीन है. व्हाट्स द सीन विद कंपैरिजन ऑफ रेशियोज, दैट अगर आपको दो रेशियोज कंपेयर करने, A:B एंड C:D, आपको ये ढूंढना है कि इफ दिस इज ग्रेटर और दे आर इक्वल और दे आर लेस, हाउ वुड यू डू इट, है ना. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कंपेयर करना है कि 3:4 एंड 2:3, क्या ये ग्रेटर है, इक्वल है या लेस है. अच्छा आदित्य, हाँ कल आए थे आप, कल नहीं मतलब फ्राइडे को आए थे. प्लेन, करेक्ट राइट. कुमार सानू जी, 6 इयर्स का गैप, मतलब आपने 6 इयर्स में कुछ तो करा होगा ना. यू वुड हैव डन समथिंग इन दो 6 इयर्स, राइट. ठीक है, इसे कैसे कंपेयर करेंगे. देयर आर 2 वेज ऑफ डूइंग दिस. वन, यू कैन ईदर गो बाय डेसिमल. 3/4 is 0.75.
2:3 इज 0.66। तो या तो डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लो कि ये बड़ा है मतलब ये बड़ा होगा, या फिर द अदर वे ऑफ लुकिंग एट इट वुड बी डायरेक्ट फ्रैक्शंस। 3:4 एंड 2:3 को कंपेयर करना है। हाउ इज इट पॉसिबल? इफ द डिनोमिनेटर्स आर इक्वल, तो डिनोमिनेटर्स को इक्वल करने के लिए एलसीएम लोगे। 4 और 3 का एलसीएम क्या? 12। मतलब ये 9/12 और ये 8/12। कौन सा बड़ा है, 9/12 की 8/12? 9/12। दैट मीन्स 3:4 इज ग्रेटर। यस, you can either use decimal or percentage, या फिर आप LCM लेके कंपेयर न्यूमरेटर्स। ठीक है, ट्राई दिस क्वेश्चन, ये वाला ट्राई करो जल्दी से। कुमार एक काम करिए, आप मेरे को सेंड मी मैसेज ऑन टेलीग्राम विथ योर क्रेडेंशियल्स, देख के फिर अपन उधर डिस्कस करते हैं। ठीक है, सेंड मी अ मैसेज ऑन टेलीग्राम विथ योर क्रेडेंशियल्स, अपन उधर बात करते हैं। ओके, प्रिया सेज बी, प्रणव सेज सी। कैट अनअकैडमी लर्न, वो बोल रहे भी भाई हाय हाय, कैसे हो? आर यू गुड? कैट अनअकैडमी लर्न। कैफुल बोल रहे बी, शिवम बी, पंकज बी, एवरीबडी सेइंग बी, संजना बी, पंकज लर्न, Shamali C बोल रहे। चलो let's do this. They are asking which of the following ratios is the largest. Okay, so we are comparing what? 3:11 with 2:7 with 5:18. If we can find out the direct values, 3:11 is 3/11, जो कि कितना? 0.2727 बार। करेक्ट। 3/11 क्या है? 3 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 27। यस। हाउ मच इज 2/7? 0.2857 एंड सो ऑन। करेक्ट। 0.285714, 2/7 exact value. Yeah, and what about 5/18? You know that 5/9 will be 0.555. Would you agree? So 0.555 का half करोगे, which is what? 0.2777 and so on. This will give you the value of 5/18. So this is what? 0.277 bar. Now we have to find out which is greatest. कौन सा ग्रेटेस्ट है? 0.285714 इज द ग्रेटेस्ट। ये अपना आंसर। दिस इफ यू आर कंफर्टेबल विथ डेसिमल या फ्रैक्शंस। ओके, या व्हाट इफ वी आर नॉट गुड विथ इट, और व्हाट इफ द नंबर्स आर नॉट दिस सिंपल? तब आप क्या करोगे? व्हाट विल बी द, सो दिस इज द फर्स्ट मेथड। व्हाट विल बी द सेकेंड मेथड? एलसीएम। 3/11, 2/7, 5/18। अपना एलसीएम क्या होगा? 7 into 18 into 11, ये होगा अपना एलसीएम। यस, सो आर न्यूमरेटर्स विल गेट मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? 3 into 7 into 18। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 into 11 into 18। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 into 11 into 7। You just have to find out which is greater, which is not. पहले एक फर्स्ट दो को कंपेयर करो। 21 into 18, 22 into 18, ये छोटा, इन दोनों में से ये बड़ा। Between these two, this is big. Okay. Between these two चेक करना है। 2 and 18, 5 and 7, 2 and 18 is 36, 5 and 7 is 35। ये अगेन छोटा, मिडल वाला सबसे बड़ा। ओके,
Clear? Samreen, yeah, it's the same thing, na Samreen. You'll still have to take the LCM of the numerator. All the same, na Samreen? You'll have to take the LCM of the numerator. All the same. Yes. So here numerator का LCM क्या हो जाएगा? 3, 2 and 5 सबको equal करना है. That means 30. 3, 2 and 5 का LCM 30. मतलब this will get multiplied by 10. This with 10. This will get multiplied by 15, this with 15. This will get multiplied by 6 and this with 6. All the same, na? आ रहा है समझ में? So you are comparing what? 30 by 110. 30 by 15 into 7 is 105. And 30 by 60 plus 48, 108. When the numerators are equal, जिसका डिनोमिनेटर छोटा उसका वैल्यू बड़ा, जिसका डिनोमिनेटर छोटा उसका वैल्यू बड़ा. तो ये सबसे ग्रेटेस्ट, फिर ये आएगा. सो दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड. स्मॉलर द डिनोमिनेटर, ग्रेटर द वैल्यू, ईदर विच वेज. ठीक है, जैसे भी आपको करना है. आई वी स्पोकन ऑफ 3 ways ऑफ डूइंग इट. 1 इन्वॉल्विंग कैलकुलेशन ऑफ डेसिमल्स, 2 इन्वॉल्विंग एलसीएम, डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर जो भी. ओके समरीन. सो बी इज आवर आंसर. ओके चलो क्विकली अरेंज दीज, फटाफट से अरेंज करो इसे. 1:3, 5:12, 4:15, 2:3. क्विक. हाँ समरीन, 18 into 6. यस. हाय आयुष. Yes, Ayush. Thank you so much, Ayush, for dropping by. That is a very good score, 98.76 percentile. Beautiful. Nice. Ayush, options के बारे में बात करते हैं. Can you drop me a message on Telegram? Telegram पे मैसेज करो. Let's talk about this, है ना? आयुष फटाफट से एक हाई भेजो अभी के अभी. अभी के अभी हाई भेजो, क्विक. ए बी डी सी. प्रणव सेज ए बी डी सी. अच्छा, अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है. ओके प्रणव गलत जगह पे कॉमा लगा है. 12:4 क्या है? पंकज सेज ABCD. शिवम से CABD. सब तीनों अलग अलग आंसर्स. ओके चलो फटाफट देखते. ए का क्या है? 1:3 विच इज 0.33 बार. बी का क्या है? 5/12. यस. 5/12 आप कैसे ढूंढोगे? व्हाट्स द बेस्ट वे ऑफ फाइंडिंग 5/12? फर्स्ट फाइंड आउट 5/6. 5/6 क्या है? 0.8333. उसे अगर आप हाफ कर दोगे तो यूल गेट 5/12 विच इज 0.8 का हाफ 0.4, 333 का हाफ 16666, है ना? यस. सी का क्या होगा? 4/15. So 4/15, best way to find out. 4/5 is 0.8. So 4/15 will be 0.8 का 1/3. Are you getting this? 4/15 क्या होगा? 0.8 का 1/3. So 8/3 is 2.66. So this will become 0.26666. So this is 0.2666 bar. And what's the last one? 2:3, which is 0.66.
What's the, we have to arrange this in ascending. What do you mean by ascending? Growing order, small to big. Yes, सबसे छोटा C, फिर उसके बाद 0.3 A, फिर उसके बाद 0.4 B, फिर उसके बाद 0.6 D. क्लियर? कोई डाउट, कोई शक गाइस? एनीबॉडी? CABD करेक्ट है जिन्होंने CABD बोला है. वेरी गुड शिवम, वेरी गुड श्यामली, सुपर्ब शुभ, अंशदीप, प्रिया, आदित्य, वेरी गुड केयरफुल, वेरी गुड प्रणव, संजना, वेरी गुड शावेश. हाँ पंकज, 0.33 को मैंने 0.3 बार लिखा है. बार मतलब बार बार आएगा वो. ठीक है. अंशदीप क्या हो गया भाई? Try to read this question carefully and answer. Don't jump. Okay. This is ratio A. ये A है पूरा और ये B है. ठीक है. या फिर इसे A is to B बोल दो. This is A is to B. This is C is to D. Which of the following ratios is the largest? A is to B या C is to D? जल्दी. Quickly try this. Shivam says C is to D. Okay. How about others? Pranav says second ratio C is to D. ठीक है. Pranav and Shivam are saying second ratio. Shruti is saying first ratio. Okay. Priya is saying second ratio. Shubh is saying first ratio. All right. चलो फटाफट करते हैं इसे. First let's do the first ratio. A is to B करते हैं. ठीक है. A is to B क्या है? 2 1/2 is to 3 3/4. Yes. यहां पे क्या कर सकते हो? 2 1/2 is what? 2.5. 2.5. 3 3/4 is what? 3.75. मल्टीप्लाई बोथ विथ 4. दोनों को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि इंटीजर आ जाएगा. 2.5 into 4 is 10. 3.75 into 4 will be what? 0.75 into 4 is 3. This is 15. तो क्या अपन बोल सकते हैं? 10:15 is the same thing. 10:15. Got it? तो A is to B का रेशियो क्या है? 10:15. Yes, so A is to B can be, is this right? Am I right? एक बार चेक कर लेते हैं. 3.75 into 4 15 करेक्ट है. 2.5 into 4 15 करेक्ट है. नो इश्यूज हियर, राइट? चलो, तो we found out A is to B is 10:15, which is 2:3 basically. This is the same as 2:3. So A is to B का वैल्यू क्या है? A is to B का वैल्यू is 0.66 है ना? 2 times 3 times 0.66. Any doubts here? Anybody? किसी को कोई डाउट हियर? नहीं. अब चलते हैं दूसरे वाले में. C is to D. यहां पे थोड़ा कॉम्प्लिकेशन रहेगा. This is 1 1/2. ये तो ठीक है. 1 1/2 ठीक है. ये 1 5/6 जो है ये प्रॉब्लमैटिक है ना? तो यहां पे देखो, व्हाट विल डू हियर इज 1 1/2 इज व्हाट? 2 + 1 3/2. व्हाट इज दिस? 6 + 5 11/6. या
दोनों का भी डिनोमिनेटर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. Yes, cross multiply denominators. This is what 18 is to 22, which is nothing but 9 is to 11. Are you understanding this? What's the second ratio? 9 is to 11. Yes, 9 is to 11 का क्या वैल्यू होता है? 9 by 11. डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर को 9 से मल्टीप्लाई करो. दिस इज 0.8181. कौन सा बड़ा है? विच इज ग्रेटर, 0.66 या 0.81? बोलो गाइस, विच इज ग्रेटर, 0.66 और 0.81? 0.81 is the larger value, so our answer will be what? C is to D. Clear? जिन्होंने C बोला, C is to D बोला, that's the right answer. Very good. Shivam, Pranav, Priya, Shyamli, Anshdeep. Hi Amar, good evening. Careful, very good. Very good. Sanjana. Right, it is C is to D. Yeah, cool guys. तो shall we wrap this up? इसको इधर खत्म करते हैं. Yeah, we'll end the session here. We still have a lot to uncover from ratios, which we will do tomorrow. ठीक है, remaining parts of ratios, and we will start proportions tomorrow. ठीक है, रेशियोज में भी स्टिल हैव कंपाउंड रेशियोज, कंटिन्यूस रेशियोज, ये सब अपन कल करेंगे. टुमारो इज व्हाट? 11th of Jan, same 3 PM. okay, remaining. So ratios and proportions lecture 2 tomorrow 3 PM, same place. Today at 5 PM, today at 5 PM we are doing a free class on the app. We call these classes as special classes. यहाँ पे we are doing profit and loss के practice questions. Yes, we are doing profit and loss के practice questions. So you can join this. If you haven't already done this, अगर आपने कभी पहले करा नहीं है, if you not done this before, then download Unacademy का learning app. Yes, and then you can use my code Surana Live when you register. Using this code you will get access to all the free content. जो भी free content है पूरा आपको access मिल जाएगा इससे. ठीक है? Yes, I will be sharing the link for this session. इसका link जो है I will be sharing it on Telegram. So I want you all to be active there. Yes, उसको mute पे मत रखो, keep the notifications on, ताकि when I send the notifications you will get an idea of it. ठीक है? शावेज 66.66 परसेंटेज में है ना शावेज? 2/3 66.66 परसेंटेज है. अपन परसेंटेज में नहीं लिख रहे, डेसिमल में लिख रहे हैं, एक ही बात है. पंकज भी एक्चुअली डन अ सेपरेट सेशन ऑन बुक्स. बुक्स पे एक सेशन ही करा है. या यू कैन सर्च फॉर दिस, यूज माई नेम अमित सुराना and type best books for quant. Okay, type this in the search bar, YouTube के search bar पे ये type करो. You will find the link for the session that I've taken. It's a detailed session on all types of books, which ones are good for which part. Yeah, so with this let's wrap things up. We will be doing the remaining tomorrow. Okay, apart from that, if you are subscribed to Plus, or if you are planning on subscribing to Plus, do it right away. This is me. Okay, I am doing a quant batch
where we are dealing with basics. That is, from the foundation level, we are dealing with percentages currently. This started on the 8th of Jan. These are Saturday, Sunday classes. I will be taking quant. There are other educators who will be taking LR, DI and VARC. Yes, you know some of them. Ashish sir ko to aap jante hoge. He's taking a session here on our channel, LR and DI. There's another batch again for CAT 22. Ronak Shah sir ko aap jante hi hoge apne channel pe. He's also taking classes. Yes, you can enroll into this if you're preparing for TISNET. Baki CAT 22 wale, you can either enroll into this or this. These are plus batches, मतलब आपको plus या iconic का subscription is mandatory. Yes, if you're planning on taking a subscription, the best ones for you are 12, 18 or 24 month subscription. You can use my code Surana Live. This will give you a 10% discount when you take the subscription. Yes, at the same time there is an offer going on that if you take plus, you get 2 months free on 12 and 24. मतलब 12 months का subscription पे 14 months, 24 months का subscription पे 26 months. उसके अलावा if you are taking an iconic subscription जो plus के सारे benefits देगा और 1-on-1 live sessions देगा mentors के साथ, yes, you can take 12 months or 24 months. Use my code Surana Live for 10% discount. Also, if you are somebody who's given this GD, PI and WAT का preparation करना है, so there are free mock sessions, feedback, knowledge sessions happening. Yes, download the app, check this out. If you're somebody who scored 80 percentile and above, you're getting 30% scholarship. If you're somebody who scored 99 percentile and above, you get 10 times of the subscription fee back. And if you come across any doubts on your practice, you can upload it on the website or on the app. Directly ask 3 doubts at a go and you can select your preferred language for the solution. Yes. Thank you so much, guys. Thank you, Sanjana. Thank you, Shruti. अंशदीप डेफिनेटली टेंशन लेना चाहिए. डेफिनेटली लेना चाहिए. कर दो चालू, अभी तक क्यों चालू नहीं किया है? स्टार्ट. थैंक यू पंकज. सिलेबस कितने दिनों में होगा? केयरफुल, सिलेबस ही नहीं है. देयर इज नो सिलेबस फॉर कैट का क्वांटिटेटिव, बट आवर एम, माई एम इज टू कवर अप. सो अपन ने we started this mid-December. Yes, so my aim is by Feb first week maximum, Feb first week तक arithmetic खत्म करने का. Yes, then we will start with geometry mensuration. That will take about a month's time, of course. So रख लो ना 4, 5, 6 महीने, 6 months maximum. So if this is January, then by June we should be complete. June तक complete हो जाना चाहिए. ठीक है? चलिए guys, thank you so much for being a part of this session. Don't forget 5 PM we are doing a special class. I want you all to be a part of it. Sanjana, YouTube only concepts and basic examples, advanced questions on app, free classes on app. That is where we are doing questions. So we will be doing difficult questions, we will be doing previous year questions, but I want you to come to the app for it. Okay, whether you're taking subscription or free classes, either which ways we'll do them. ठीक है? चलिए, thank you so much guys, have a great day ahead. Please keep yourself safe, keep learning, let's crack it.